Assalamu alaikum and welcome back to Just Law on IQRA TV. I'm your host Ilyas Bulbulia. Just before the break, we were looking at how someone can make a successful extension application in the United Kingdom, a successful immigration application within the United Kingdom to extend their spouse visa. So somebody who's here on a spouse visa, they've completed their 2.5 years or they're about to complete their 2.5 years. How do they successfully extend their visa within the United Kingdom? A couple of things we looked at before the break. First of all, you need to make sure that the application is submitted in time. Secondly, you need to also make sure that if you're doing it yourself and you're going online, make sure you make the correct application. It's quite easy to use an incorrect link on the within the Home Office website and end up making an incorrect application. So just make sure you do it on time and then you also use the correct links if you're doing it yourself to make the application online. So that's the sort of practical things that you need to bear in mind. What are the requirements that need to be fulfilled? Well, obviously somebody who's here on a spouse visa is already married. That's not a problem. Main few things that you need to bear in mind is something that we discuss on a regular basis, which is that there is a financial requirement which needs to be met. So and there is also a requirement that you must prove that you're living together, and there's also a requirement that you must have sufficient knowledge of English. So we just want to look at that in greater detail today. So what is this English language requirement? As our viewers will be aware, somebody who comes to the United Kingdom for the first time would normally pass an English test in their home country, whether it's in Pakistan, Bangladesh, India, wherever it is, they would pass an English test in their home country. And that English test is normally done at the lowest level at which English can be tested. So they would normally do the A1 test in English. It's normally called A1 Life Skills. So once they've done their A1 Life Skills in their home country, that's one of the requirements fulfilled for them to be able to make a successful spouse application to come to the United Kingdom. Now, at the extension stage, what the idea is that somebody's English should over time get better. So at the extension stage, the level of the English test is slightly higher. It's a test which is at A2 level, which the person making the extension application needs to pass. So obviously when they've come to the United Kingdom, they've passed the A1 test, and now we're looking at passing the A2 test. We'll look at this in greater detail after we've taken our next call. Hello, Assalamu alaikum. तो खैरियत से हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी खैरियत से, जी तुम्हें जी जी अब सालम का जी डोमेस्टिक वायलेंस के लिए मैंने जो वीज़ा अप्लाई की थी ना जी राइट ओके जी जी, तो उसके लिए मुझे अपील में मिला है, वो उन जी लोगों ने रिफ्यूज़ कर दिया था। ओके ओके तो हमने अपील फिर से कर दी है, जी तो कितने दिन में उसका जवाब आएगा और ओके हमें जाना पड़ेगा वहाँ पे अपील के लिए? जी वो नॉर्मली जब ये टाइप ऑफ केसेस को जब वो रिफ्यूज़ करते हैं ना, तो नॉर्मली वो रिव्यू देते हैं। तो उसने आपको रिव्यू दिया है जी, रिव्यू दिया था हमें। ऑलराइट ओके। सो रिव्यू की जो टाइम लिमिट है ना, वो बहुत कम होती है। आपको नॉर्मली वो 14 डेज देंगे रिव्यू के लिए। जी, हमने और रिव्यू का वो हमारे सॉलिसिटर ने डाल दिया है। जी जी डाल दिया। तो जी, तो वो जब कितने दिन में अभी उनका जवाब आएगा रिव्यू हाँ का कोई जी आपको? जी, तो इसमें नॉर्मली है ना कि आपके लिए तो ऑब्वियसली टाइम लिमिट होती है। वो कहते हैं कि आपको 14 डेज़ में रिव्यू में डालना पड़ता है, मगर जब वो लोग जो होम ऑफिस को जो जवाब देना है, तो इसमें उसकी तरफ से कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो वो जवाब दे सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 14 डेज़ में, 1 मंथ में, 2 मंथ्स में। वो उसकी मर्ज़ी है कि वो आपको कब जवाब दे। इन माई एक्सपीरियंस नॉर्मली वो रफली विदिन 1 मंथ टू 6 वीक्स में वो जवाब दे देते हैं, उसका हाँ या ना का जवाब दे देते हैं आपको विदिन दैट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, विदिन मंथ टू 6 वीक्स। रिव्यू में नॉर्मली क्विकर होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जब
केस डाला था तो समटाइम्स उसको 3 months 4 months 5 months 6 months लग जाते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के केस असेस करने में। ओके। मगर और रिफ्यूज़ दूसरा एक क्वेश्चन था मेरा, जी मुझे जनवरी में ना मुझे यूरोप की कंट्री में जाने का इरादा है मेरा। जी जी तो 31 अक्टूबर को ये रिजल्ट शायद आएगा ब्रेक्सिट का, जी तो मुझे वीज़ा लेनी पड़ेगी यूरोप के लिए। जी यूरोप के लिए अभी क्या हुआ है कि जो यूके ने तो ये कहा है कि एज फार एज द यूके इज़ कंसर्न्ड जो यूरोपियन पासपोर्ट वाले आ रहे हैं तो उसको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं होगी, ऐसा उसने कहा है। ब्रेक्सिट होने के बाद भी कोई उसके पास सिस्टम होगी कि वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होगी, वो आ सकेंगे यहाँ। यहाँ आएंगे पर हाँ हमें मगर जाना जो हो तो जाने यूरोप की में। बात है ना वो यूरोप की तरफ से अभी क्लैरिटी नहीं है कि वो क्या करने वाले हैं। सो ओके, सारी अगर जो वो बात मना। जी सारी जो बात हो रही है अभी तो यूके क्या कर यूके गवर्नमेंट यूके होम ऑफिस एंट्री के लिए क्या करेंगे कि उसके लिए थोड़ी सी क्लैरिटी है कि ये रूल्स है, मगर यूरोप की तरफ से क्या होगा वो कुछ वो तो मालूम कोई नहीं है। अभी पब्लिश ही नहीं हुआ है कि यूरोप में क्या है। अगर आप जाना चाहते हैं तो क्या होगा, अगर आपके कोई पार्टनर है वो जाना चाहते हैं वो क्या मोस्ट लाइकली क्या होगा कि वो वीज़ा फ्री एंट्री होगी, वो वहाँ जा सकेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप मैनी अदर कंट्रीज से आप दुबई जाने वाले हैं तो वो आप विदाउट वीज़ा जाते हैं और ऑन एंट्री वो वीज़ा आपको दे देते हैं। मोस्ट लाइकली वही सिस्टम होगा कि आप यूरोप में जा सकेंगे और ऑन एंट्री वो वीज़ा दे देंगे, मोस्ट लाइकली वो वीज़ा फ्री होगी। ओके, जज़ाकल्लाह। और वो रिव्यू का आपने जो बोला वो कोई टाइम लिमिट नहीं है नहीं इमिग्रेशन के? नहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो जो आपका लॉयर्स है वो आपको एडवाइस दे सकेंगे, वो आपको अप्रोक्सीमेट बताएंगे उसके एक्सपीरियंस से। बट मेरे एक्सपीरियंस से, और रिव्यू बहुत डिफरेंट केसेस में देते हैं, वर्क परमिट्स में भी देते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस में भी देते हैं। मेरे एक्सपीरियंस में ये है कि रफली उसको 1 month 1.5 months लग जाता है रिव्यू करने में, मगर टाइम लिमिट कोई नहीं है उसकी एक्चुअल जो जिसके साथ उसको कंप्लाई करना उसमें जो डॉक्यूमेंट है वो मुझे शॉर्ट पड़े हैं, है। जी तो फिर से मैं अभी डॉक्यूमेंट रखूँ रिव्यू के अंदर में, जी जी तो वो चल जाएगा कि वो लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे कि नहीं पहले क्यों नहीं रखा अभी? जी जी रिव्यू का एक प्रॉब्लम है कि वो रिव्यू में वो नए डॉक्यूमेंट्स नहीं देने, जनरल उसका रूल है कि नए डॉक्यूमेंट्स नहीं आप सबमिट नहीं कर सकते। इसमें भी थोड़े से एक्सेप्शंस होते हैं, मगर जनरली स्पीकिंग आप न्यू डॉक्यूमेंट्स नहीं दे सकते, मगर क्योंकि वो आपको ये कहेंगे कि न्यू डॉक्यूमेंट्स आपको पहले जमा करने थे, आपने नहीं किया, तो न्यू डॉक्यूमेंट्स जो अगर आपको सबमिट करने हैं ना तो आप न्यू एप्लीकेशन डालो। और तो ये फाइल ये करके न्यू एप्लीकेशन। सो फॉर एग्जांपल अगर ये रिव्यू में आपका जो डिसीजन अनसक्सेसफुल हुआ, उसने कहा कि नहीं हम आपको वीज़ा नहीं देंगे, तो आप 14 डेज़ में री एप्लीकेशन कर सकते हैं, पूरी ओके, फाइल तैयार ये करके। रिव्यू में भी अगर रिफ्यूज कर दे तो? हाँ तो जी और तो न्यू एप्लीकेशन 14 डेज के अंदर में जी कर सकते 14 डेज़ में कर सकते हैं, और जो वो कहते हैं ना कि ये चीज़ें मिसिंग है तो आप उसको दे सकते हैं। आई थिंक आपके सिचुएशन में मुझको ये लगता है कि अगर ये हुआ है कि कोई डॉक्यूमेंट्स मिस हो गए हैं या तो आपको वो टाइम पे नहीं मिलते थे अभी मिल गए, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि अगर रिव्यू में अगर उसने ना कह दिया तो फिर न्यू एप्लीकेशन न्यू फ़ी के साथ आप जमा कर दो। ओके। और फिर और देखो अगर मैं न्यूज़ का 14 डेज के अंदर में मैंने रिव्यू फिर से री अप्लाई नहीं किया तो मुझे ये कंट्री कितने टाइम में छोड़ना पड़ेगा? वो जो डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में है ना वो लिमिट ऐसी नहीं होती है। एक्चुअली आप 14 डेज़ के बाद भी अप्लाई करते हैं ना तो दे विल स्टिल कंसिडर द एप्लीकेशन, मगर 14 डेज़ में मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर आपने डाल दिया ना तो वो रिमूवल एक्शन कुछ कोशिश नहीं करेंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि आप कंट्री छोड़ो। अगर आपने नहीं डाला तो कंट्री छोड़ना नॉर्मली उसका ये है कि विद इन अबाउट 28 डेज़ आपको कंट्री छोड़ना चाहिए नॉर्मली। उसका ओके। लोग छोड़ते तो नहीं है, मगर उसका नॉर्मल रूल ये है कि आपको 28 डेज़ में कंट्री छोड़ना चाहिए। नॉर्मली तो पीपल नहीं छोड़ते, दूसरे कोई एप्लीकेशन डालते। अगर ना छोड़ू तो ओवर स्टे हो जाऊंगा ना मैं? जी ओवरस्टे हो जाते हैं, और वो इसमें 2 थिंग्स कर सकते हैं। वो आपको कह सकते हैं कि आप रिपोर्टिंग के लिए आओ, जो यहाँ लोकली यॉर्कशायर में लीड्स में रिपोर्टिंग होता है, उसका एक रिपोर्टिंग सेंटर है लीड्स में, बुला सकते हैं। अगर आप कोई और जगह पे रहते हैं तो लोकल होम ऑफिस के जो रिपोर्टिंग सेंटर में है वो आपको वो बुलाएंगे। फर्स्ट थिंग ये होगा। और सेकंडली अगर आप 1 or 2 months में कुछ नहीं करेंगे तो फिर
वो आप अगर उसके पास आपकी पासपोर्ट है तो आपको वो जब रिपोर्टिंग में जाते हैं तब बिठा सकते हैं और आपको रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम अगर आपने कोई नया एप्लीकेशन नहीं डाला तो. सो ये बेसिकली वो सिचुएशन है उसका. ओके, जज़ाकल्लाह. थैंक यू. आपके कॉल के लिए Okay, जज़ाकल्लाह. थैंक यू वेरी मच. So just going back to what we were discussing before, which is how to make a successful extension application within the United Kingdom. Couple of points, obviously get your timing right and make sure you make the correct application. So a couple of key points when you make an extension application, which is English language requirement has to be met. And that's what we were looking at before we took the call from our last caller. At the extension application, the requirement that needs to be met is that you must pass, the applicant must pass the A2 test in English. Now, this is a slightly higher test than that which is done when the initial spouse application is made from abroad and when you come to the United Kingdom. It's a slightly higher, it's at the next level. A2 test isn't so difficult that you need to be able to have a full conversation. That's the next level up. That's known as the B1 test in English. At that stage, you should be able to have a reasonable conversation. Doesn't have to be fluent, but you should be able to have some kind of dialogue with the person taking the test. Well, whereas the A2, which is the test that's required at the extension stage, that's at a lower level. But obviously, it's one where there has to be slightly more fluency than the test which was passed initially when the spouse application was made. A good place to get a good idea about what's involved is to go on to the website that you have to use to book the English test. Most people, in my experience, book the test with an organisation called Trinity College. They're known as Trinity College London, although they have visa centres across the United Kingdom. And when you go onto their website and you put in the test that you'll need to do, the A2 test, there are tips there. There are sort of guidance there which explains what happens at the test, what the format is, what you can do to prepare. There's also a number of YouTube videos there which will give you an idea about what happens at the test when you go there. So it's a good idea to familiarize yourself with what happens when you go for that A2 test by going onto that website when you book your test to look at what's involved, get the guidance, and also look at the YouTube videos and get an idea, feel for what's going on. It'll give you an idea about whether you're ready to pass the test at A2 level or not. And obviously, if you're not, what you should be doing is, going to English classes to try and get your English level to that level where you pass the A2 test. Now, just one point before we move on, that the A2 test only tests your ability as far as speaking and listening is concerned. Let's take our next call before we return to this. Hello, Assalamu alaikum. Hello. हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम, कैसे ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी. अच्छा, मैंने पूछना था कि आप सोशल वर्कर का जो है होता है ना, केस डिसेबल बच्चे होते हैं वो मिल जाते हैं जी. वो कोर्ट प्रोटेक्शन आप केस करते हैं? वो किया हुआ है, मुझे थोड़ा सा आइडिया दे दो ना, मैं आपको फिर बता दूँ ना कि क्या. जी, जो सोशल वर्कर की आप जो बात कर रहे हैं ना, तो वो क्या हुआ है? वो बच्चे को ले गए हैं ना. जी समझ गया. ऑलराइट, बच्चे को तो हमारी डेट है वैसे कोर्ट में ना 17 दिसंबर की. ऑलराइट, ओके. सो दिसंबर की डेट है. वो बेस्ट है ना, वो आप कोई अगर आप कोई हमें एडवाइस वगैरह कोई. जी, मैं आपको जनरल एडवाइस दे सकता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर आप अभी पूछना चाहते हो या आपका नंबर आप छोड़ दे तो मैं आपको जनरल एडवाइस दे सकता हूँ. और फिर मैं आपको कोई ये भी बता सकता हूँ कि फैमिली लॉयर, बेस्ट फैमिली लॉयर्स कौन है आपके एरिया में. तो फ़ोन नंबर आप दे देंगे कि मैं. जी, तो आप ऐसे करो, आप आपका नंबर अगर कंट्रोल रूम के साथ छोड़ जाए तो मैं आपको शो के बाद. नहीं, अब वो आ गया होगा मेरा नंबर तो. जी ठीक है, ऑलराइट, ओके. तो मैं आपको जब शो फिनिश हो जाएगा उसके बाद मैं आपको फ़ोन करूँगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन सुन रहे हैं ना, तो फिर मैं. जी ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके. आफ्टर द शो
finishes, इंशाल्लाह मैं आपसे बात करूँगा और आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँगा कि बेस्ट वे फॉरवर्ड क्या है आपके लिए. Yeah, just going back to what we were discussing, we looked at the English language requirement and how we need to pass the test at A2 level. The other two main requirements that you need to fulfill obviously is the financial requirement and the issue about relationships and how do you prove that your relationship is genuine and subsisting. We've looked at finances numerous times on our previous show, so let's look at that later on. Let's look at how do you prove that your relationship is genuine and subsisting. Now, obviously, when the initial spouse application is made to come to the United Kingdom, at that stage, again, you have to demonstrate that your relationship is genuine and subsisting. You can't simply submit a marriage certificate and marriage photographs and say, look, we've got married, and just rely on that for a visa, because the Home Office actually wants to look at more than that. They want to look at what's happened after your marriage. So typically, you might recall, if you've made a spouse application from abroad, you might recall your lawyers saying to you, well, you know, we need evidence of the pictures together after your marriage. You need evidence of calls that you've been making to each other. You need evidence of messages that you've been sending to each other. So all that really is, or I should say the final point, and you sometimes see this, sometimes you don't, that money that has been sent from here to Pakistan, for example, a husband might be sending money to their wife. So the evidence, whether it's photographs together after the wedding, whether it's phone calls together to each other, whether it's evidence of messages or money being sent, all that is being submitted to show that the relationship is genuine and subsisting. So it's not enough, even at that stage, to simply say we're married. That's enough. You've had to do more than that. You've had to submit evidence of the ongoing relationship. So in the same way, we need to address that when we apply for an extension. Let me take my next call before I return to this. Hello, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. I just want to ask a question. My daughter-in-law, she's got the indefinite 2 weeks ago. Okay. She can apply for the British nationality. All right, okay. So your daughter-in-law, in terms of your son, does he, I'm assuming he has a British passport, does he? Yeah. All right. He's born here. Ji. And your daughter-in-law, how long has she been in the United Kingdom? 5 years, non-stop. Ji. So she is able to apply for nationality straight away. She is able to apply because she is married to a British national, a British citizen. She doesn't need to wait 1 year like other people need to do. So if she was married to somebody who only had indefinite leave, didn't have a British passport, then she would have to wait 1 year. But because your son has a British passport, she can apply immediately. She's been here for 5 years. She's married to a British national. She's able to apply. The only thing I should say is if she applies now and doesn't wait for 1 year, which she's able to do, she will need to put your son's passport in. She will need to submit her marriage certificate to show the link to your husband that she's married to a British citizen. Okay. Where about what you need the application form online or? There's still two ways that it can be done. There is an online application that you can do, or you can do a paper application. In my experience, it's easier to do the paper application. So if you get the form downloaded, so this is one of the few applications where the form is still available. So the form is form AN1. A for Apple, N for November, 1. So if you Google form AN1 nationality, that should bring up the correct form. If you print the form off, my view is that the best thing to do is do the paper application. Just on that, once you printed the form off, also separately, you'll need to print off the payment slip. So in terms of paying for the nationality application, it doesn't come with the form, so you'll need to print off the payment slip as well separately. But there should be a link to the payment slip when you go onto the
government website. So they're the two documents you need to print off, the Form AN1 and the payment slip. How long it takes? Once the form is submitted, the current processing time is around 2.5 to 3 months. Okay. And after that, she can apply for the British passport. Yeah. So let's say in 2.5 to 3 months, the application is processed. She will then have the opportunity. She will then be told. She will then be told that she needs to book a nationality ceremony. Okay. So once she goes to the ceremony, it's on that day that she's given the nationality certificate. So at that stage, she becomes British. And it's that certificate that you need to apply for a British passport. Okay. Okay. Thank you very much. Okay. The form is too complicated, or no, not necessarily. It's in terms of immigration applications, Form AN1, generally speaking, is one of the easier applications to make. Now, in my experience, like a straightforward case like yours, it should be okay. You just need to bear in mind, in terms of her absences from the UK, has she been out? No, she's continues here for 5 years. Right. So once they've been here for 5 years, married to a British national, absences, there's nothing significant there. There's no criminal convictions, motoring convictions or anything. No. There's no overstaying or anything. Those are generally straightforward applications. Now, if there were problems with overstaying or criminal convictions or absences were too high, then I would say to you, look, you really do need to get an immigration solicitor to look at it before you apply. But the way you've described it sounds like it's a straightforward application. Okay, so you pay the fee online, or just it's everything in the form? It's on the form. So you know what I said, okay, if you print off Form AN1, if you print off the payment slip, the fee, the current fee is £1,330. £1,330 is the current fee. So you just need to complete. We just need to basically pay that fee. And send it off. Yeah, and basically send it off. Yeah. Okay. Thank you very much for your. No problem. Thank you very much. For your call. Thank you very much for your call. Okay, so just before the call, we were looking at these spouse applications, immigration applications, where somebody is here on a spouse visa, you want to extend your application within the United Kingdom. And what I'd gone on to was the requirements which need to be fulfilled, and we were looking at relationship. What documents do you need to submit to show that the relationship is genuine and subsisting? Now, in terms of the relationship, I was explaining that when somebody comes from abroad, they would normally be submitted evidence of calls, messages, money sent to each other. That's evidence that you submit at the initial spouse application stage. Here, once they're in the United Kingdom, they want to extend their visa. The documents that you submit to demonstrate the genuineness of the relationship, they are slightly different. Let's take our next call and return to this after that. Hello, Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम, खैरियत से हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी खैरियत है, जी। अच्छा, मेरे माँ बाप मम्मी पापा को मैं यहाँ पे बुलाना है मुझे जी विजिटर वीज़ा के लिए। जी ठीक है। मेरे डैड 3 मरतबा यहाँ पे पहले आ चुके हैं। जी। और मॉम 2 मरतबा आ चुके हैं यहाँ पे। ठीक है जी। तो मुझे 5 साल के लिए वीज़ा के लिए अप्लाई करना है जी, तो मैं कर सकता हूँ? जी। लास्ट टाइम कब आए थे आपके पेरेंट्स यूके में? कितना टाइम हो गया उसका? मेरे डैड 4 साल पहले आए थे। राइट, ओके। और मॉम 2 साल पहले आए थे। ओके, इट्स नॉट टू बैड, आप कर सकते हैं, पर मे बी सेफर ये है कि बिकॉज वो आप 2 इयर्स के लिए अप्लाई करो, 5 इयर्स के लिए अप्लाई करो, उसकी फ़ीस डिफरेंट होती है ना। तो मे बी इट्स बेटर कि आप 2 इयर्स के लिए अप्लाई कर लो अभी वो पेरेंट्स के लिए। might be better because फादर का थोड़ा सा गैप हो गया है ना, 4 years ago वो आए थे। मदर का तो ठीक है, वो 2 years ago आए थे, which is quite a recent visit। फादर का थोड़ा सा गैप है of 4 years ago। आप कर सकते हैं 5 years वीज़ा के लिए, there's no problem। इसकी फ़ीस ज़्यादा है, might be practically it might be better कि आप वो 2 years वीज़ा के लिए अप्लाई कर लो। 2 years आपको कोई आइडिया है कितनी फीस लगती है उसमें? 2 years के लिए from my recollection is about in the region of about £200. And 5 years के लिए it's about £400
फिर ये क्या होता है कि वीज़ा सेंटर की समटाइम्स वो सेपरेट फ़ी होती है ऑफ अबाउट £40 £50, वो सेपरेट होती है. आप अगर मेन वीज़ा सेंटर यूज़ करते हैं ना, तो अगर पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं और इस्लामाबाद यूज़ करते हैं तो वहाँ कोई फ़ीस नहीं होती है. इंडिया में बॉम्बे जाते हैं तो वहाँ फ़ीस नहीं होती है. मगर जो स्मॉलर सेंटर्स है ना, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में मीरपुर है, तो वहाँ वो एडिशनल यूज़र पे फ़ी कहते हैं, नदर £40 ऐसा कुछ एडिशनल पे करने पड़ते हैं. बट द डिफरेंस इज़ कि फ्रॉम for 2 years it's around 200, for 5 years it's around 400. I'm just thinking कि अगर वो रिफ्यूज़ हो गया ना तो it'll end up losing a lot of money. It might be better कि आप वो 2 years की वीज़ा के लिए पहले अप्लाई करें, so आपके जो खर्चा जो है ना वो कम होगा. ओके. और दूसरा सवाल, मेरा भाई को स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे बुलाना है. जी ठीक है. तो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर मैं अगर बुलाऊँ तो अभी उन लोगों ने शायद, मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि रूल्स निकाला है उन लोगों ने. जी 1-1.5 साल की वीज़ा के लिए अगर आप अप्लाई करो तो वो लोग 3 साल के आपको वर्क परमिट भी देते हैं इसके बाद. जी. तो वो कब से शुरू होगा? वो शुरू होगा नेक्स्ट ईयर सितंबर से. वो अभी कह रहे हैं कि ये न्यू सिस्टम आएगी नेक्स्ट ईयर सितंबर में. इसमें क्या है कि जब आपका कोर्स आप जब यूके में आपका ग्रेजुएशन हो जाएगा, सो यू विल ऑब्टेन द डिग्री. तो आपको जब डिग्री मिलेगी, वेदर इट्स अ बैचलर्स डिग्री या तो मास्टर्स डिग्री, जब आपको डिग्री मिलेगी तो ये लाजमी है कि डिग्री मिलनी चाहिए. जब आपको डिग्री मिल जाएगी तो इसके बाद आपको 2 इयर्स के वर्क परमिशन के लिए आप अप्लाई कर सकेंगे. सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ कोई आया मास्टर्स करने के लिए और वो नेक्स्ट ईयर उसको मास्टर्स डिग्री मिल जाएगी तो उसको 2 इयर्स वर्क वीज़ा के लिए वो अप्लाई कर सकेंगे. इसमें द एडवांटेज इज़ के कोई वर्क ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है. वो वीज़ा के लिए सिंपली अप्लाई कर सकेंगे काम करने के लिए. और पहले से वीज़ा नहीं देते यहाँ पे, ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री जी होने के बाद अप्लाई करते जी, वो सेपरेट वीज़ा है एक. जब वो स्टूडेंट के पास जो वीज़ा होगी ना, वो तो Tier 4 स्टूडेंट वीज़ा है ना, Tier 4 स्टूडेंट वीज़ा. तो फिर जो ग्रेजुएशन हो जाएगा तो उसके बाद वो डिफरेंट कैटेगरी होगी. अभी तो नाम नहीं दिया है उसने. वो पहले एक वीज़ा थी सिमिलर, उसको कहते थे पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, उसको कहते PSW कहते थे. तो वो सिमिलर ऐसा कुछ वीज़ा होगा पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा का. तो वो कैटेगरी के अंडर में जाना पड़ेगा अप्लाई करके. ऑब्वियसली उसकी कोई फ़ीस भी होगी. क्योंकि मैं 2010 में आया था ना, तो मुझे तो ये 2009 के अंदर में आया था, तो मेरे को है ना 3 साल एक साथ में वीज़ा दे दी थी. 1 साल पढ़ाई के लिए, 2 साल वर्क परमिट के लिए. हाँ, शायद वो ओल्ड सिस्टम में से था. मगर ये जो न्यू सिस्टम है ना, इसमें वो तो आपका जो कोर्स है ना उसके ड्यूरेशन है, कोर्स का जो ड्यूरेशन, तो वो ड्यूरेशन की वो वीज़ा देंगे ना. सो अगर 3 इयर्स का कोर्स है तो 3 इयर्स की वीज़ा देंगे. अगर 1 ईयर का कोर्स है तो 1 ईयर की वीज़ा देंगे. इसके बाद आपको सेपरेट अप्लाई करना पड़ेगा. ये उसकी आइडिया है कि ये करेंगे वो. अभी कोई तय नहीं है, कोई नक्शे नहीं है. वो अभी तक उसने डिटेल्ड गाइडेंस ऐसा कुछ इश्यू नहीं किया है. उसने सिर्फ अनाउंसमेंट किया है. सो अब जो इमिग्रेशन में जो नॉर्मली जो होता है ना, न्यू रूल्स एट्सेट्रा, तो नॉर्मली इट फॉलोज अ प्रोसेस के अनाउंसमेंट होता है कि ये समटाइम्स ये कहते हैं कि हम ये वी हैव दिस इंटेंशन, देन वो अनाउंसमेंट करते हैं कि बस वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस दिस. अगर वो भी हो गया, नेक्स्ट स्टेप उसकी कोई गाइडेंस आती है ना, रूल्स बनाते हैं कि गाइडेंस आती है, तो वो स्टेज पे अभी तक हम नहीं आए हैं. उसने थोड़ा सा आई थिंक कंसल्टेशन हुआ था पहले. उसने अभी उसका जो इंटेंशन है टू इंट्रोड्यूस दिस न्यू स्कीम, वो उसका अनाउंस कर दिया. डिटेल्ड कोई गाइडेंस नहीं है, डिटेल्ड रूल्स क्या है उसके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं है. अगर मुझे अप्लाई करना है तो आपकी ऑफिस बाटले में है? हमारे ऑफिस ड्यूसबरी में है, वेस्ट यॉर्कशायर में ड्यूसबरी में. जी, तो हम कर सकते हैं. जी ओके. तो अगर आपको मिलना हो तो कौन से टाइम? वो ठीक है. वो आप अगर आपका नंबर छोड़ जाए तो होपफुली मैं आपको फिर बाद में फ़ोन करूँगा इंशाल्लाह. ओके, थैंक यू. ओके, जज़ाकल्लाह आपका कॉल के लिए. थैंक यू वेरी मच indeed. So just going back to what we were discussing, which is a visa extension application for somebody who's on a spouse visa. What evidence do you need to submit to demonstrate that your relationship with your spouse is genuine in the United Kingdom? In practice, all that the Home Office requires is documents coming to the same address. So what they're looking for is letters,
bills, or any other documents coming to the same address for you and your partner. So that's what they're looking for. The period over which you need the documents isn't 6 months. It is actually documents which cover the duration of your last visa. So if you were applying now in, let's say, October 2019, then you would submit documents which cover the years 2017, 2018, 2019. You don't need documents for every month, but if you manage to get for each year about 4 or 5 documents in your name, 4 or 5 documents in your partner's name for 2017, 18 and 19, that should be more than sufficient. The Home Office actually asks for less documents than that. The Home Office actually only seems to request about 6 letters, documents over a period of 2.5 years. But in practice, I think it's better if you have documents which not only span the period of the previous visa, in our case, in the example that I've given, 2017, 18 and 19, but try and get about 5 documents each. So you might end up submitting about 25 documents, etc. In both your name, partner's name. Some might be joint, some might be separate. There should be adequate evidence there of the relationship. And the reason I say submit that is what we don't really want is for the Home Office to come back and start asking for documents about the relationship. The problem with that is it just then delays matters considerably. So better to try and address this upfront. Now, just on that, it sounds like a straightforward requirement. You need to demonstrate that you're living together, and it's done by submitting documents that you've received over the last few years. Many times in practice, when you go and see your immigration lawyer, you find that you've only become aware of this requirement then, and you might only be able to get hold of documents over the last 6 months as opposed to over the last 2 years or 2.5 years. That can present difficulties, but there are normally ways around that, and your lawyer should be able to advise you on how to get over that hurdle where you haven't kept documents for the last 2.5 years. Ideally, what you should do in that situation is look at what other evidence of the relationship can you get which confirms that you're living together. So for example, it might be that you can get a letter from the doctor who confirms that, yep, for the last 2-3 years you've both been registered at the same address as far as the surgery is concerned. And if the doctor is prepared to do this, the doctor might go further and say, yes, they've been attending, husband and wife, maybe with the child, they've all been attending the surgery together. That's one piece of evidence that you can get hold of if you haven't kept documents over the last 2.5 years. Another piece of evidence that you could get hold of is, for example, you could get, if you've got children and they're at school or at nursery, you might be able to get a letter from the school nursery just confirming, look, the address that we hold for the child, for the parents, is the same address, and yes, husband and wife, mum and dad, they've been attending nursery with the child as well. And something else you can do, you might be able to get a letter from the local councillor if you know him or her, confirming that as far as they're concerned, you're the constituent and that you have been living at the same address. And you know that they've seen you over the last few years, and as far as they know, the relationship is genuine and subsisting. So there are other things that you can do if you haven't been able to obtain those documents over the last 2.5 years in your name or in your husband's name or in your joint names. Approaching the doctor, approaching the school, approaching a local councillor, these external individuals, organisations, their letters do carry some weight. The other thing that you can do potentially is that if you're living with parents, if you're living with your in-laws, you might be able to get a letter from them confirming that, look, yes,
they live with us, they have been living with us. And look, some of the bills they're not going to have in their names because we, as the owners of the property, mum and dad, mother-in-law, father-in-law, who own the property, they might say, we have the letters, bills coming to us at this address in our name. So look, they're not going to have those documents. Third thing you can do, we've looked at these professional organisations that can support you. We've looked at your whoever's house you're living in, mum, dad, mother-in-law, father-in-law. They might be able to give you a letter confirming you live there. The third thing you can do is you might be able to get documents from your bank, old bank statements. You might be able to get old bills, etc. So you might be able to get all that to show that you've been living together. That unfortunately brings us to the end of the show. We'll look at the things that we've missed out on this next week. We should be back inshallah next week on Monday at 6 o'clock. Until then, Assalamu alaikum.